Assalamu alaikum, dear students of 8th class. I am fine and hope you would be fine by the grace of Almighty Allah. Today my subject is English, class 8th, and my topic is global warming, lecture number 2nd. My topic is global warming, lecture number 2nd. Dear students, we have been already discussed on the global warming a day ago. Today I am going to read this second para of global warming. Before reading, open your book from page number 18. Open your book from page number 18. तो प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले आप अपनी किताब टेक्स्ट बुक को सफ़ा नंबर 18 पे यानी सफ़ा नंबर 18 पे आप खोलोगे जहां से आज हमें पढ़ना है. लेट अस रीड. In the Indian subcontinent, the Himalayan region has a glacial coverage of 33,000 square kilometers and is aptly called the water tower of Asia, as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually. Glaciers from this region mother several streams and rivers in the subcontinent, which support economy and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, and Bangladesh. But one unnatural phenomenon is set to change the very lives of these people as well as the rest of the world, endangering their very existence. Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. While people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future. 2 decades back, global warming was considered a Western concept, but now its impact is visible across the globe. Today, places as cold as Kashmir are also experiencing the impact of global warming. तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे. दूसरा प्यारा जो है यहाँ तक पढ़ेंगे क्योंकि प्यारे बच्चों ये डाउनलोड भी होना चाहिए. In the Indian subcontinent, the Himalayan region has a glacial coverage of 33,000 square kilometers and is aptly called the water tower of Asia. प्यारे बच्चों, बरसीगीर में जो हिमालयन खित्ते की जो ग्लेशियल कवरेज है यानी ग्लेशियर कहते हैं बर्फानी तूदे को, बर्फ के पहाड़ को. हिमालयन खित्ते में हिमालय में जो ग्लेशियल कवरेज है वो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर है. एंड इज एपर्टली कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, और इस लिहाज से इससे वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं. दैट इज वाई, क्यों इसे वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं? क्योंकि ये सालाना 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी मुहैया करता है. यानी मिलियन की अगर बात हम करेंगे तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है. 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है. तो 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यानी वाटर सप्लाई ये मुहैया करता है. तो प्यारे बच्चों, जो दरियाई गंगा है, जो बाकी दरियाव हैं, बाकी नदियाँ हैं, उनका सोर्स जो है वो है हिमालय रेंज से ही है. यानी वो हिमालय रेंज से ही उनका सोर्स है पैदा होते हैं. जैसे हिमालय रेंज में बर्फ का बड़ा पहाड़ यानी बर्फानी तूदा, काफ़ी बड़ा बर्फानी तूदा जिससे हम इंग्लिश में आइस ब्रिक या इसे ग्लेशियर कहते हैं. तो ये हिमालय रेंज में हिमालयन खिता जो है इसमें जो ग्लेशियल कवरेज है वो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर है. यानी सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसकी नस्बत ये सालाना 8.6 मिलियन क्यूबिक वाटर सप्लाई मुहैया करता है.
Glaciers from this region mother several streams and rivers in the subcontinent. تو پیارے بچوں اس خطے میں یعنی کوہ ہمالیہ کے خطے میں جو یہ گلیشیئرز ہیں یہ کافی ندیوں اس گلیشیئر سے کافی ندیاں اور کافی دریاؤ بنتے ہیں، یعنی کہ یہ کافی دریاؤں اور ندیوں کی ماں ہے، یعنی ان سے کافی دریاؤ، ان کے پگھلنے سے کافی دریا اور کافی ندیاں بنتی ہیں، بہتی ہیں، which support economy and the livelihood of millions people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal and Bangladesh. which support ان گلیشیئرز سے اس خطے میں بہت ساری ندیاں اور دریا بنتے ہیں، جس سے برصغیر کے ممالکوں کی معیشت، جس سے برصغیر کے ملک کی جمع ہے ممالکوں کی معیشت اور رہن سہن کا ذریعہ ہے۔ تو پیارے بچوں سب کنٹیننٹ جیسے چائنا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، نیپال اور بنگلہ دیش ہیں، انہی کو ہم سب کنٹیننٹس آف انڈیا یعنی برصغیر کے ممالک کہتے ہیں یا پڑوسی ممالک، ہندوستان کے پڑوسی ممالک بھی کہتے ہیں۔ But one unnatural phenomenon is said to change the very lives of these people as well as the rest of the world, endangering their very existence. عالمی انسانیت گلوبل وارمنگ کی وجہ سے عالم انسانیت اب کافی مشکلات میں، یعنی جسے ہم بٹ ون ان نیچرل فینومینن، لیکن ایک غیر قدرتی رجحان گلوبل وارمنگ یعنی یہ ایک غیر قدرتی رجحان اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی لیکن ایک غیر قدرتی رجحان نے اس خطے کے لوگوں کو یا لوگوں کی ہستی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اسی خطے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اب گلوبل وارمنگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. عالمی انسانیت کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب عالمی انسانیت اب کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ While people are still debating whether global warming is in progress. آج کل لوگ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ماہر یہ مباحثہ کر رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ عروج پر ہے، گلوبل وارمنگ چل رہی ہے۔ اس وقت ہر کوئی چاہے وہ ماہر ہو، کوئی سائنسدان ہو، وہ یہی مباحثہ میں مبتلا ہیں کہ گلوبل وارمنگ جو ہے اب وہ شروع ہو گئی ہے۔ In general consensus among most scientists and researchers that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future. اور اب اس سے یعنی کہ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے، اور اب اس سے مستقبل میں یعنی آئندہ آنے والے وقت میں اس پر قابو پانا، اس پر کنٹرول کرنا، اس کو کنٹرول کرنا یا اس پر قابو پانا مشکل ہے۔ فیوچر پیارے بچوں آئندہ کو کہتے ہیں، آنے والے وقت کو کہتے ہیں۔ 2 decades back, global warming was considered as Western concept, but now its impact is visible across the globe. 2 دہائیوں سے پہلے گلوبل وارمنگ کا تصور صرف ویسٹرن تصور ہی کیا جاتا تھا، یعنی ویسٹرن کلچر میں ہی اس کا تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کا اثر پورے دنیا پر پڑا ہے۔ اکراس دا گلوب یعنی پورے دنیا پر اب اس گلوبل وارمنگ کا اثر پڑا ہے۔ آج سے 2 decades، تو پیارے بچوں 1 decade میں 10 سال ہوتے ہیں، 2 decades ہو گئے 20 سال۔ آج سے 20 سال پہلے گلوبل وارمنگ کا جو تصور تھا وہ صرف ویسٹرن کلچر، ویسٹرن پر ہی اس کا تصور تھا،
वेस्टर्न कल्चर पर इसका तस्वुर था, लेकिन आजकल पूरे दुनिया में इसका असर पड़ा है, यानी इस ग्लोबल वार्मिंग का असर अब पूरे दुनिया पर पड़ा है. टुडे प्लेसेस एज कोल्ड एज कश्मीर आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. आजकल जैसे प्लेसेस एज कोल्ड, जैसे सरद जगह कश्मीर, ये हमारी कश्मीर, आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी इसका असर कश्मीर पर भी पड़ा है. इससे पहले 20 साल पहले, 2 दहाइयों से पहले इसका असर वेस्टर्न कल्चर पर था, लेकिन आजकल पूरे दुनिया, कश्मीर समेत पूरे दुनिया पर इसका असर पड़ा है. किसका असर प्यारे बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग का. तो प्यारे बच्चों आज इतना ही. इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसका तीसरा प्यारा पढ़ेंगे. तो प्यारे बच्चों, ग्लेशियर कहते हैं बर्फानी तूदे को, बर्फ के पहाड़ को. सब कॉन्टिनेंट कहते हैं पड़ोसी ममालिक को. जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऊपर ये लफ्ज दिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसे पड़ोसी ममालिकों की कहते हैं. तो पड़ोसी ममालिक जो इंडिया के हैं वो है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश. तो अननेचुरल फिनोमिनन यहाँ पे है. तो अननेचुरल फिनोमिनन को, इसको अगर हम इसका ये माने देखेंगे तो गैर कुदरती रुझान इसको हम कहेंगे, गैर कुदरती रुझान. तो एग्जिस्टेंस, एक लफ्ज यहाँ पे एग्जिस्टेंस हस्ती को कहते हैं, एग्जिस्टेंस हस्ती को कहते हैं. तो कैटास्ट्रोफी का मतलब हो गया बर्बादी की तरफ. अब जो ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरे दुनिया पर पड़ा है, जिसकी वजह से मतलब जो बुरा असर इसकी वजह से पड़ा है, तो उसको भी हम कैटास्ट्रोफी, एक किस्म की बर्बादी कह सकते हैं. तो इंडेंजरिंग देयर वेरी एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उन पर भी इसका असर है. इंसानियत पर भी इसका ज्यादातर असर इंसानियत पर ही है. तो इसके साथ साथ जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उन पर भी इसका असर है. तो यहाँ पे एक लफ्ज है प्यारे बच्चों, डेकेड. तो फ्यूचर, आने वाले वक्त को कहते हैं, मुस्तकबल को कहते हैं. 2 डेकेड्स, यानी एक डेकेड में 10 साल होते हैं, 10 सालों को एक दहाई कहते हैं. 2 डेकेड्स का मतलब हो गया 2 दहाइयां. तो इम्पैक्ट का मतलब हो गया प्यारे बच्चों असर. इम्पैक्ट का मतलब हो गया असर, यानी अब ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ा है. आज से पहले इसका कंसेप्ट, इसका तस्वुर किया जाता था वेस्टर्न कल्चर, लेकिन आजकल इसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है. तो इकॉनमी, हाँ प्यारे बच्चों एक लफ्ज इकॉनमी, यहाँ पे इकॉनमी माशत को कहते हैं, इकॉनमी माशत को कहते हैं. जैसे हमने अभी पढ़ा है, इस ग्लेशियर की वजह से, ये जो ग्लेशियर है हिमालयन रेंजेस, तो इसकी वजह से ये ग्लेशियर जो है काफ़ी नदियों और काफ़ी दरियाओं का सोर्स है, काफ़ी नदियों और दरियाओं का सोर्स है, ज़रिया है. जैसे दरियाई गंगा का ज़रिया हिमालयन रेंज से ही दरियाई गंगा मतलब शुरू होता है, पैदा होता है. तो फिर हिमालयन रेंजेस को ही हम दरियाई गंगा का सोर्स कहते हैं. अनकंट्रोलेबल का मतलब हो गया वो चीज जिस पे हम काबू न पा सकेंगे, उसे हम अनकंट्रोलेबल कहते हैं. तो प्यारे बच्चों आज इतना ही. मुझे भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को गौर से देखोगे, अपनी किताब को पेज नंबर 18 पे खोलकर गौर से इसको देखोगे कि आज हमने यहाँ तक पढ़ा, यानी उसका दूसरा लेक्चर. इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ से हम इसका तीसरा प्यारा जो है वो पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो को, इस लेक्चर को गौर से देखोगे. शुक्रिया. थैंक यू सो मच.